Hello and welcome to the 12th day of the 15 days physical science online program for class 10, and we are left only with 3 more days. Besides today, we have 13th, 14th and 15th, 3 days more. Yes, what some of you, Rudra, had suggested that if we cannot complete the chapter metals and alloys from chemistry, then I will share my handouts, my notes, and also if I can have a video sometime in leisure without you, then I can also share you before your test. I would like to do that, to have a video on metals and alloys, but not with you, but with myself, with the camera, pretending that I am looking at Rudra, I am looking at Om Prakash, Anubhav, Rajasri. I do that. So today, our job is the next part, electromagnetism part 2. And there was 3 mistakes that was detected by Rudra. That is number 1, I didn't give the answer. I changed the question from calories to kilocalories so that it becomes a handy expression of 344 kilocalories. So now I give the answer that was missing out. And question 11 was totally missing. Just read, I have given a question, an analytical question as to find out what will happen if the resistance is doubled, keeping the current and time fixed. And what will happen if the resistance is doubled while keeping the voltage and time fixed. So you give the answer. We have studied 3 equations and have also studied, we have also studied how the heat produced varies with which parameter, keeping the other parameters constant, you know them. So you answer them. And there was another mistake here in question number 14. The word fuse was missing, using a fuse before the current. And the answer was missing. It is obviously the fuse will have, and the statement was also wrong. What is the resistance? No, what is the maximum current that can pass through the fuse? It will be little more than what is the current requirement of that particular heating element or any device. So it was found to be 4.54 in question number 13, and therefore this C will be the correct answer. 5 ampere will be the maximum current that the fuse can withstand before melting, because all the other 3 are lower than 4.54 or equal to. Even equal to will not do, it will be little more. If equal to that will fuse, then obviously amaro बारंबार सेटा ये हबो हमर आसुची 4.54 आसुची बाय चांस मनकर चेंज हे गेला वोल्टेज सो दैट करंट आसी गेला 5
7 ଆସିଗଲା. So it should be minimum current that can pass through the fuse that you choose. ତାଠୁ ଅଧିକା ଆସିଲେ ବି fuse melt କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି minimum watt ଟା ବେଶୀ appropriate ହବ. ଏତିକି କରେଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ତା ଲାଭ କଣ ହବ? ମାନେ ତମର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଟା 4.54 ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଦରକାର କରୁଛି, ସେ 2.54 ରେ କିମ୍ବା 3.54 ରେ ମେଲ୍ଟ କରି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଯାଇ ଆସିପାରିବନି. ମେଲ୍ଟ କରୁଥିବ, ଖାଲି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି କାମ କରିବନି. Even not 4.54. So the correct answer is this. So with this, we have to start today a new aspect of electromagnetism. That is, we are joined by now Swapna Rani Barik, Shraddha Suman, Arja, Electromagnetism Part 2, where we will study the magnetic effects of current and their field lines. Now, गोटे जितेबाला गोटे करंट पास करुची तुम बैटरी लगे देछ तार, एटा गोटे ओपन अनइन्सुलेटेड कॉपर वायर. इन्सुलेशन कले तार प्रभाव टिके कमी जीवो. सो एटा पूरा नेकेड वायर टा एक्टिंग एज ए मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ता भितरे जेतेबाला बाट देकरी current जाउथबो से पर्यंत it will behave as an electromagnet. It will produce magnetic field that can be known by the deflection of a compass needle. काली हमर compass needle कथा पड़ी थिला. compass needle टा जो pivot ऊपर अछि, गोटे पिन ऊपर अछि, गोटे पिन alpine भलिया पिन ऊपर से होउची. there is almost zero frictional force. And this is a very light body. So the inertia is also very, very small. And the polarity is only concentrated in the tip region, not in other regions. So there are so many factors which make the compass needle suitable for deflection in Earth's magnetic field, as well as other magnetic field, may be due to a permanent magnet or a temporary magnet or an electromagnet like this that we are going to study. And I told you that I didn't tell you that Earth's magnetic field is very, 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 very weak. It is less than even an ordinary bar magnet that is marketed. So what question Mr. Rudra posed, that if we keep it on a pivot, even a bar magnet, and bring it to South Australia, where the north pole of the Earth's magnet is lying at some point, then there might not be any orientation, because the friction will be so high because of its inertia. The friction will be so high, and the magnetic field is usually greater for the bar magnet than the Earth's magnetic field. It is only, about 0.5 Gauss. 1 Tesla, which is the SI unit of the flux density or field strength, samarthya, it is 10 to the power 4 Gauss. Gauss is a smaller unit of magnetic field. 10 to the power 4 Gauss. And Earth's magnet average is 0.5 Gauss. Very, very low. Where amar jo use koruchu laboratory re jo bar magnet, horse magnet, so usually 20 Gauss, 40 Gauss, 50 Gauss. So that will not help in the proper alignment habani, north pole, south pole, like alignment it habani, because inertia will not allow. The friction force will be so high that even if it has got a lower magnetic field,
Even then मोटाटा जो अच्छी तो मास अच्छी इनर्शिया अच्छी फ्रिक्शन एते अधिक हबो से प्रॉपर ओरिएंटेशन दबनी. Now let us come back to this wire जो बाटो देकरी जाउची एमती जाउची एटा प्लस अछि माने एमती प्लस रु माइनस को जाउची. सो तुम्हें बाहर रखिथिलो कंपास निडल टाकू हठात करी आ तळु को नै आसिलो कि आ ऊपर को वायर ऊपर को नै आसिलो करंट चालीची. सो हठात नहीं आसले डिफ्लेक्शन को दिगरे हबो एवं काहे की हबो को दिगरे हबो आगो जानिबा काहे की हबो आ टिके परे जानिबा. को दिगरे हबो ना जदी कंपास निडल रो जो आगुरु थिला साउथ पोल नॉर्थ पोल जमती अर्थ रो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल को ओरिएंट करिक थिला सेई डायरेक्शन रे जदी करंट जाउची एवं सेई भलिया गोटे वायर तळे तमे रखिलो ताले सडन करी नॉर्थ पोलटा वेस्ट को जीवो एवं जदी सेई भलिया कंडीशन रे तुमे कंपास निडल टाकू तार ऊपर रखिलो ताले से ईस्ट को जीवो काहे की जीवो तार रीजनटा मु परे कहि खाली एते की जे जदी साउथ रु नॉर्थ को साउथ रु नॉर्थ को ज्योग्राफिक साउथ को नॉर्थ किंबा मैग्नेटिक निडल रो साउथ को एंड नॉर्थ एई डायरेक्शन रे जदी करंट जाउची तुम्हें जदि मैग्नेटिक कंपास को तले रखिलो तारर ताले नॉर्थ पोलटा वेस्ट को जीवो ऑब्वियसली साउथ पोलटा वेस्ट को या ईस्ट को जीवो. आई एम सॉरी. ऑन द अदर हैंड कंपास निडल टा को जदि तारर ऊपर लिखिलो ताले नॉर्थ पोलटा ईस्ट को जीवो ऑब्वियसली साउथ पोलटा वेस्ट को जीवो. ऑन द अदर हैंड जदि साउथ पोल नॉर्थ पोल दिगरे अछि हमर कंपासटा ज्योग्राफिक किंतु तुम्हें एटी पोलैरिटी चेंज कर दलो एटी माइनस प्लस कर दलो एटी प्लस माइनस कर दलो तुम्हें ताकू कहि परिबोनी जे तुम्हें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल दिगरे सब बेले करंट चालू एटा हम हाथ कथा पोलैरिटी हमें चेंज कर दलु बैटरी टाकू उल्टेई देलु डूम जो बाहरची जो बैटरी रो एम जो बाहरची ताकू एपट कर दलु फ्लैट पटटाकू एपट कर दलु फ्लैट पटटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव तेनु वर्तमान करंट फ्लो करूची नॉर्थ रु साउथ दिगरे आगुरु थिला साउथ रु नॉर्थ दिगरे एवं मैग्नेटिक कंपास रो जो डिफ्लेक्शन हबो ठीक ऑपोजिट जदि तळे रहिबो ताले से ईस्ट को मूव करिवो नॉर्थ पोलटा ईस्ट आडे डिफ्लेक्टेड हबो एंड व्हाट विल हैपन टू साउथ पोल यू नो. सिमिलरली जदि कंपास निडल टाकू तारा ऊपर रखिबो देन द नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टू द वेस्ट. सेठी ऊपर रखिले ईस्ट को होतला एठी वेस्ट को जीवो ठीक ऑपोजिट यार ऑपोजिट एटा हबो. तबे मु तुमको आउ किछ समय परे पचारिबी व्हाट विल हैपन टू द कंपास निडल. तमे बाहर थिला दूर रे थिला से ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल को इंडिकेट करथला हठात करी तुमे गुटे तार तळकू नै आसिलो जो तार बाटो देकरी करंट फ्लो करूची. I will not ever tell about electron flow. When I am dealing with physics, I will say current flow means from positive to negative. So current flow करूची तुम्हें डिफ्लेक्शन कला गोटे पटे फट किन चली गला एपट होई इक्विलिब्रियम को पळे आसला सेट रहि गला तबे पुनी नै आसीबो जदी दूर को ताले से अर्थ संगे अर्थ रे बोलो मानिबो एबे अर्थ रे बोलो मानुनी ता बोलो मानुची ता संगे इंटरेक्शन करूची. वेल सेटा देखियो पड़ियो तमे कहयो पड़ियो नॉर्थ पोल कोठी करंट रे डायरेक्शन ता कोन तमे जाननल पॉजिटिव पोलटा लागिची एपट साइड रे. सो करंट एमती जाउची डाहण रु बाम को जाउची किंतु नॉर्थ पोलटा अछि डाहण पटे साउथ पोलटा अछि बाम पटे आगुरु. सो तमे तळे आनी रखि देलो कोन हबो व्हाट विल हैपन टू the deflection direction वो direction से deflected हबो. yes अनुभव आर्य ये आउथर क्वेश्चन करंट गोटे कंडक्टर रे बहुची स्रोत बहुची एवं सेटा राइट रु लेफ्ट को बहुची
तुमरो राइट रु तुमरो लेफ्ट को डायरेक्शन रे बहुची एवं गोटे कंपास नीडल तम पाकर थिला देखिलो जे तार डायरेक्शन टा राइट दिगरे त माने नॉर्थ पोल टा राइट दिगरे अछि साउथ पोल टा लेफ्ट दिगरे अछि तुमरो तमे आनिकरी से तार तळे फ्लोइंग जो करंट फ्लो करूची ता तळु को नै आइलो then what the deflection of the compass needle will be in which direction? Yes, Rudra. Sir, sir north pole ta north to east east side ହେଇଯିବ, south ଜଣେ କୁହ ରୁଦ୍ର sir north pole ta east side को deflection हो precisely correct एई चित्र देखिकरी मु कहूची नॉर्थ पोल रु साउथ नॉर्थ डायरेक्शन रु साउथ डायरेक्शन को जदी फ्लो करिवो मु कोन कहिची मो पाखरे जो कंपास नीडल थिला एठी रखितली एठी सेटा नॉर्थ पोल ता राइट डायरेक्शन रे देखौथला तुमरो राइट एवं साउथ पोल ता तुमरो लेफ्ट डायरेक्शन देखौथला बर्तन करंट ता तुमरो राइट रु लेफ्ट को आसुची मु जानि सुनि करे नॉर्थ को साउथ कहलिनी राइट रु लेफ्ट को आसुची आसुची ता माने नॉर्थ डायरेक्शन रु साउथ डायरेक्शन रे करंट आसुची एबे मु कहली ए भलिया जदी हुए ताहाले जदी तुमे तळे रखिबो कंपास नीडल ता तार नॉर्थ पोल टा जीवो ईस्ट पटे डिफ्लेक्ट करिवो एवं जदी तेटा ऊपर को नै जीवो हठात आनिकरी ऊपर रखि दबो तार ऊपर रखि दबो ताहाले नॉर्थ पोल टा वेस्ट को डिफ्लेक्टेड हो ऑन द कंट्रारी जदी साउथ रु नॉर्थ को जाउथबो बारु डाहण को जदी जाउथबो करंट एवं तुमरो मैग्नेटिक कंपास मध्य सेही साउथ पोल टा बां पटे नॉर्थ पोल टा डाहण पटे अछि सेही एई शॉर्ट एई साउथ और नॉर्थ को आधार करिकरी मु कहूची साउथ एंड नॉर्थ एठी मध्य साउथ एंड नॉर्थ को आधार करिकरी मु कहूची नॉर्थ रु साउथ को एटा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करूतला एटा ज्योग्राफिक साउथ पोल को पॉइंट करतला एटा सेही डायरेक्शन रे करंट जाउतला साउथ रु नॉर्थ सेते बेले तळे रखिले वेस्ट को ऊपर रखिले ईस्ट को किंतु जेते बेले नॉर्थ रु साउथ को जाउची करंटा सेते बेले नॉर्थ पोल टा ईस्ट को डिफ्लेक्टेड हबो तळे रखिले वेस्ट को डिफ्लेक्टेड हबो ऊपर रखिले तो एटा काहे की हबो मु परे कहबी किंतु many of you could not answer that was my disappointment now you tell me जदी आमे गोटे कंपास नीडल आनिबा जहारो नॉर्थ पोल टा डाहण पटे अछि तुमरो साउथ पोल टा बां पटे अछि तुमरो आगुरु थिला गोटे करंट जाउची देखिलो सेटा मैग्नेटिक कंपास अनुसार दूररु देखिलो मैग्नेटिक कंपास रो दिग अनुसार से साउथ रु नॉर्थ को जाउची बां रु डाहण को जाउची नॉट डाहण रु बां रु डाहण को माने साउथ रु नॉर्थ को जाउची तुमे कंपास नीडल टा को आनी करी हठात करी तार ऊपर रखि देलो से फटकिन डिफ्लेक्शन हो एक्जेक्टली से नॉर्थ डायरेक्शन रहिबो किंतु जो एग्जैक्ट डायरेक्शन रे थिला से रहिबोनी टिके डिफ्लेक्टेड हो सो को डायरेक्शन रे डिफ्लेक्टेड हो यस अनुभव अर्ज sir, say north to east, south to west ହେଇଯିବ। कोन नॉर्थ पोल टा को डायरेक्शन रे डिफ्लेक्टेड हो east direction। यस ईस्ट डायरेक्शन रे कारण मु ए चित्र रे तळे थोइची मु पचारिची एटा को जदी ऊपर को नै जीवो मु पचारली टिके चेंज करी क्वेश्चन पचारली तबे नॉर्थ टा वेस्ट को डिफ्लेक्टेड न होई नॉर्थ पोल टा ईस्ट को डिफ्लेक्ट हो ऊपर को नेले एति कि तुमे अनुभव करि परनो कोन इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन मस्ट बी वेरी स्मार्ट काहे कि तो हमें परे जानिबा कौन इंटरेक्शन होची कि भली दीटा मैग्नेटिक फील्ड भितर परस्पर इंटरेक्शन हो हेकरी गोटे पटे फील्ड डेंसिटी बढ़ी जाउची गोटे पटे फील्ड डेंसिटी कमी जाउची सो डिफ्लेक्शन टा होची फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड
सेटा हमें परे पढ़िबा किंतु एटा मन रखिबा जे मैग्नेटिक कंपास रो जो डायरेक्शन अछि साउथ एंड नॉर्थ से साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन रे जदी इलेक्ट्रॉन जदी करंट फ्लो करे तळे रखिले वेस्ट को ऊपर रखिले ईस्ट को जदी कंपास नीडल रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट जाउची तबे तळे रखिले कोन तळे रखिले अनुभव तळे रखिले जदी कंपास नीडल रो डायरेक्शन रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाउची करंट तेबे कंपास नीडल को आनिकरी हठात से तार तळे रखिले को पट को जीवो श्रद्धा सर नॉर्थ पोल टा वेस्ट को नॉर्थ पोल टा जदी वेस्ट को गला ताहले साउथ रु नॉर्थ को गले मु पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन रे कहली माने नॉर्थ रु साउथ को आस्ती डायरेक्शन टा जो डायरेक्शन रे अछि मैग्नेटिक कंपास टा अन्य धर एठी अछि मैग्नेटिक कंपास से सीधा थिला एमती थिला एवं मु कोन कहली जो डायरेक्शन रे अछि साउथ पोल नॉर्थ पोल ओरिएंटेड हे के अछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाउची करंट टा एठी कोन साउथ पोल नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन रे अछि करंट रे डायरेक्शन मध्ये सेया तेबे तळे वेस्ट को ऊपर ईस्ट को किंतु जदि ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट जाउची करंट हम हाथ रे अछि तबे व्हाट विल हैपन टू द कंपास नीडल तळे रखिले श्रद्धा सर नॉर्थ पोल टा ईस्ट को जीवो मु क्वेश्चन टा को टिके मझरे मझरे चेंज करू आई एम नॉट कीपिंग द क्वेश्चन दैट आई एम पोजिंग एक्जेक्टली इक्वल सेठी कहली एबे कहली कोन जो डायरेक्शन रे मैग्नेटिक कंपास अछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे कहि देली तो जो डायरेक्शन नॉर्थ रु साउथ जदी डायरेक्शन टा हुए गोटे जे कोनसी गोटे मैग्नेट रो डायरेक्शन टा होचे नॉर्थ रु साउथ तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे माने साउथ रु नॉर्थ एटा साउथ रु नॉर्थ एटा भी साउथ रु नॉर्थ रु साउथ डायरेक्शन हुए नहीं क्वेश्चन टा टिके श्रद्धा टिके नॉर्थ रु एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज द कन्वेंशन तार ऑपोजिट माने साउथ रु नॉर्थ हाँ ठीक अछि तार ऑपोजिट माने साउथ रु नॉर्थ माने जोटा पुराना केस हला त माने सेम डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ये भी साउथ नॉर्थ ये भी साउथ नॉर्थ जो डायरेक्शन रे साउथ नॉर्थ अछि से डायरेक्शन रे जदी करंट आसिला मु क्वेश्चन टा गुटे चेंज करछि ताहले तळे रखिले वेस्ट को ऊपर रखिले ईस्ट को किंतु जो डायरेक्शन रे साउथ नॉर्थ अछि मैग्नेटिक कंपास रो तर ऑपोजिट डायरेक्शन रे जदी नॉर्थ साउथ रे जदी करंट आसिला तळे रखिले ईस्ट को ऊपर रखिले वेस्ट को तार ठीक उल्टाटा सो आउ समय नष्ट न करी कि आगे जिबा वर्तमान पढ़िबा जे गोटे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वेयर जो मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि करूची तार मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन केमती जानिबा से जानिबा पई गोटे रूल ता ना होची मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कौन तुम हाथ टिके टेक हाथ को टिके ऊपर को टेक राइट हैंड को एमती कर एवं थंब टाकू बुढ़ा आंगुल टाकू करंट रो डायरेक्शन रे देखैबो जो पटे जाउची एमती जाउची कि एमती जाउची कि एमती जाउची कि एमती जाउची करंट रो डायरेक्शन रे जदी देखैबो धरो एई केस ता मु कहूची करंट रो डायरेक्शन ता तळु को जाउची सो मु देखैली एमिति राइट हैंड रो थंब टाकू करंट रो डायरेक्शन देखैली बाकी अन्य आंगुल टाकू कर्ल कर देबी एमती कर्ल कर देबी माने एमती मोड़ी के एमती कर देबी एमती सो जो कर्लिंग ऑफ अदर फिंगर्स जो डायरेक्शन रे जाउची से डायरेक्शन होची द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल बी सर्कुलर इन नेचर
तार ताकू जदि आमे कंपास निडल रे फॉलो करिवा ताहले ताकू जॉइन कर देले गोटे सर्कुलर पाथ हबो जदि गोटे गोटे कार्ड नबा व्हाइट बोर्ड नबा तापर फुटे करी करंट रो वायर टाकू पुरेइबा एवं चलेइबा काहाकू ना गोटे कंपास निडल को एमती विभिन्न पोजीशन को नबा डॉट डॉट दबा तार साउथ एंड नॉर्थ पोल रे डॉटिंग करिबा एवं सब डॉट उडा को जॉइन करिबा देखिबा गोटे सर्कुलर लाइन्स ऑफ फील्ड लाइन्स रो डायरेक्शन होची सर्कुलर इफ दिस current carrying conductor is straight then its field lines will be circular. And how to know the direction? If you hold the thumb in the direction of the current, then all other fingers curl. That curl direction will give you the direction of the magnetic field that the current produces. So here you find that there was no current. But once you pass the current, they will be aligned. Supposing 10 ta khande tomoro compass needle achi, gote nahi 10-15 ta achi. तुमे गोटे सर्कल आगुरु आमे जानि छे कोन हबो तो गोटे सर्कुलर पाथ रे बा सर्कल गोटे ड्रा करी करी सेही सर्कल रो भिन्न भिन्न पोजीशन रे रखि दियो. करंट जेतले जाउ नथिबो देखिबो सेमानकर सब गुड़ाक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रे थिबे. ए तीरटा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन जोग्राफिक नॉर्थ एंड पछपटटा जोग्राफिक साउथ थिबे. द मोमेंट यू पास द करंट ऊपर को जाउची वर्तमान थंब will be up so that the direction of the current will be anti-clockwise. If the thumb will be down, then it will be clockwise. Eta thumb will be up. So the korjuna ne hatere karo so that the other fingers is curling in a anti-clockwise manner. So seta automatically tame dekhibo sabu gudaka jo achi 10-15 टा नेइचो कंपास निडल सेमानकर कंटा एमिति देखिबो जे सेमानक पूरा सर्कल सृष्टि करछुंती. Same thing has been shown here that thumb taku dekheichi direction of the current. So the other fingers you have to hold the wire in your hand re tomor as if tome dharicho current carrying conductor ku tome hath re dharicho एवं थंब डायरेक्शन रे करंट अछि. सो अदर फिंगर्स जो कर्ल करछि सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस. और तमे जदि गोटे स्क्रू तमे गोटे कांथरे कि गोटे काठरे तमे भितर को पुरोच जो डायरेक्शन रे पुरोच भितर को पुरोच माने इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इफ द स्क्रू इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट then the rotation of the screw, the direction of rotation of the screw will give you the direction of the magnetic field. धर मु तळुको स्क्रू टाको तळुको काठ भितर को नउची. सो मु क्लॉकवाइज बुलौची सो दैट इते भितर को जाउची. ता माने जदी करंट रो डायरेक्शन टा एम्ति भितर को देन मु बुलौची क्लॉकवाइज then definitely clockwise direction will be the direction of the magnetic field. Either you can use the right hand thumb rule or the corkscrew rule. cork भितरे गोटे स्क्रू बुलौछ जदि cork भितरे पसुची ताले clockwise तो तुम उल्टा करूछ सेटा बाहर को बाहरुची एंटी क्लॉकवाइज तुम बुलौछ सेटा स्क्रू रो टिप टा बाहर को बाहरुची ता माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट जाउची then definitely the field lines will have an anti-clockwise direction. एटा देखो सही जिंसटा गोटे एक्सपेरिमेंट से करिसंती ओरस्टेड I mean, straight up with compasses around. Now, एटा गोटे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर टे what I'm going to do is I'm going to connect this wire एबे सब here, सीधा अछि which then will cause current to go straight down and then back through this wire back to the battery. एमती जीवो माने If current is going एमती down, एंटी you क्लॉकवाइज expect to go in a circle like this. So all the compasses should rearrange themselves so that they're in a circle like this. And let's see if that happens. लगे देला करंट देखो चलला बर्तन डिफ्लेक्टेड हे करी गोटे जगह इक्विलिब्रियम को पळे आसीबो
देखिला बेलको सर्कल हे जो तार टिप You see, the compasses show the magnetic field lines, and the magnetic field lines. गोटे कुनी are सर्कल गोटे circles बड़ around सर्कल the एमती plane. जदि बस सो वर्तमान देखिबा जे जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एटा तुमरो आदौ बहिरे नाही स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एपटे जाऊ करंट कि ऊपर जाऊ गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस डी रे एई जगह रे केते फील्ड स्ट्रेंथ पकोउची व्हाट इज बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस current तो stop हो गले there will be no magnetism. These are all electromagnetism. So current चलीची गोटे constant current चलीची एवं से गोटे particular distance d रे केते magnetic field दउची वेस्टेड परीक्षा करी देखिले that is inversely proportional to the separation between the straight carrying conductor and the point at which you are going to find V. Inversely proportional. Durugu gale definitely magnetic field strength kamibo, and it is directly proportional to the current. Current ro strength बढ़ेले current जदि बढ़ेइबो ताहले मध्य current जदि बढ़ेइबो तबे directly field strength भी बढ़िबो. So ये दीटा जाको जदि गुणी देबो डिस्टेंस संगरे प्रतिलोमानुपाती करंट संगरे समानुपाती so that it will be product of I into 1 by D and the proportionality constant as jauchi gute term called mu and 2 pi is a constant. Mu by 2 pi it is a constant. Mu is a very great property of the medium called permeability of the medium. It varies from medium to medium, and that tells to what extent it can resist against the formation of magnetic field. जदि permeability गोटे medium रो अधिका ताहले से field खाई जीवो field strength कमे दबो. जदि permeability कम ताहले it will be permeability is the measure of the resistance of a material against the formation of magnetic field. So permeability विषय तुम्हें यथेष्ट जानकारी तुम्हें पाइबो 12th क्लास रे मु जस्ट इंट्रोड्यूस करछि मैग्नेटिक फील्ड डिस्कशन आसिले परमिएबिलिटी आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन आसिले परमिटिविटी आसीबो परा कोनता ना थिला परा प्रतिरोधित ना परमिटिविटी रे कोन ओडिया हितला के कहि परिबो परा वैद्युतांक परमिएबिलिटी सेमती कोन ओडिया थिबो देखिनी सो परमिएबिलिटी देखो टेस्ला मु तो कहितली 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गस आजि कहली सेटा टेस्ला रो डेफिनेशन एठी मु कहली गोटे टेस्ला इज डिफाइंड एज द फील्ड इंटेंसिटी और बी जनरेटिंग 1 न्यूटन फोर्स गोटे डिस्टेंस रे for per 1 meter per the passage of 1 ampere current per 1 meter conductor गोटे मीटर कंडक्टर हेतिबो 1 ampere current पास करथिबो एवं से जे कोन सी गोटे पॉइंट रे एठी हो डिस्टेंस रिलेटेड अवश्य जो पॉइंट रे से 1 टेस्ला करिवो सेटा हला तार टेस्ला 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द फोर्स जोटी 1 न्यूटन फोर्स करिवो सेटा हला 1 टेस्ला फील्ड जनरेट करूची 1 Tesla is defined as the field intensity generating 1 Newton से 1 Newton force generate करिवो ऊपर आ गोटे चार्ज ऊपर बॉडी ऊपर से पकेइवो हमें पढिबा सेटा मेकानिकल इफेक्ट ऑफ ये चार्ज करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड से आ गोटे चार्ज ऊपर आ गोटे मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऊपर केते फोर्स पकेबो से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रो किछि नाही so magnetic field depends on the nature of this material not who is coming iron asibo cobalt asibo neodymium asibo ki tungsten asibo doesn't matter
So it is producing a field which is 1 Tesla if it produces a force of 1 Newton when 1 ampere current passes through 1 meter length straight carrying conductor. So Tesla is also equal to Newton per meter per ampere. Gote meter length, gote ampere current. So Newton per ampere per meter. Ebong taku jodi convert kar debo, it can be converted to Newton meter inverse ko convert kar debo kg second to the power -2 or kg per meter second square. So kg per second square ampere inverse madhya Tesla ejibo. Tesla is equal to this as also this. Permeability jodi ethi thila is equal to the unit of B, which is Tesla, into meter square. So Tesla is equal to Newton. So mu is equal to B. B jagare ame likhi pariba Newton ampere inverse meter inverse. तो पुणी सेठी गोटे जदि मीटर स्क्वायर गुणा मीटर खाली गुणा हलानी एम्पियर हरा हलानी तेणु अल्टीमेटली परमेबिलिटी रो आसीबो एट देखो म्यू रो एकक म्यू होची परमेबिलिटी तार ओडिया मु कहि पारुनी इज इक्वल टू टेस्ला इनटू डी बाय आई म्यू म्यू म्यूटा 2 पाई टा को नेली नि कांस्टेंट. सो टेस्ला बी आर टेस्ला जगह मु लिखिबे कोन न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स डी होची मीटर स्क्वायर एम्पियर होची आई होची एम्पियर. सो इठी कोन हे गला ना एम्पियर तळ को चली गले मीटर इनवर्स मीटर ना डी होची मीटर ना मीटर कोन एरिया आइची स्क्वायर काई कहले डी होची डिस्टेंस मीटर. सो मीटर मीटर इनवर्स एटी कटि गले एम्पियर तळ को चली आसले सेटा हैला न्यूटन एम्पियर्स टू द पावर -2. तो सेटा आइची एवं न्यूटन आ गुटे न्यूटन आउट यूनिट होची परमेबिलिटी रो हेनरीज पर मीटर. हेनरीज पर मीटर तमे एठी मु कर देची तमे देखिबो हेनरीज इज अनदर यूनिट. हेनरीज पर मीटर इज अनदर यूनिट फॉर परमेबिलिटी. परमेबिलिटी ऊपर एते डिस्कशन करी लाभ नाही वर्तमान. जति गोटे सर्कुलर लूप रे करंट जाए आमे पढिले स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर रे करंट. बर्तमान जदि करंट गोटे सर्कुलर लूप रे जिबे आमे सोलेनॉइड कथा पढिबा जदि जाए ताहले तार कोठी तार डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कोन ना ठीक उल्टाटा कॉर्क जो राइट हैंड थंब रूल रो ठीक उल्टाटा. इफ ऑल अदर फिंगर्स द कर्लिंग डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द current, then the thumb will represent the direction of the magnetic field. तो वर्तमान एटा को धर करंट ए डायरेक्शन रे जाउची जदि हमें एमती करिवा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन थंब टा जाउची तळु को एमती करिवा थंब टा एमती जाउची. सो हमें जदि एई लूप टा गोटे कार्डबोर्ड भितरे फुटी किरि अछि तार एई पटे फुटीची से पटे फुटीची तळु को जाईची कार्डबोर्ड टा अधा रही ऊपर अधा रही कार्डबोर्ड रो तले. तो आम मन मन भाव डेफिनेटली डायरेक्शन होची एमिथि एवं जदि गोटे पट साइड को पळे आसीबा देखिबा इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर. ए पोर्शन टा देखिबा गोटे निर्दिष्ट छोटो पोर्शन जदि नबा ताले सेटा गोटे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होबो. देन तार लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस उडा सर्कुलर होबो जेमती आमे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पे बाहर करथुलु सेमती एटा एमती जाई एमती जाउची. सो एमती 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 सो गुडे सर्कल पाइबो किंतु मझी मझी को चली आसले जते दूर को जीवो से सर्कल सरीबनी. सो इट विल बी ए वेरी लार्ज कर्वेचर पाइबो.
এবং মঝি কো যদি জীব exactly it will be going without any curvature, it will go straight without taking any curvature. At the middle it will be straight, but in all other position it will divert and it will bend. And as you come close to any part, you know, the lines, field lines will be circling, encircling that particular portion. But the exact moji position it will be straight. ଆଉ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ର ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ତାହେଲେ ତୁମ ଆଡକୁ ନାକ ଭିତରେ ଢୋ କିନି ପଶିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମଝି ପୋଜିସନ ରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିଟିଂ ଆଟ୍ ୟୋର ନୋଜ। ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ନାକରୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ away from your nose. I hope you understand the difference between straight carrying conductor and how to find the direction of the magnetic field that it produces, and how to you know, draw the lines, field lines by using compass. It is the compass एमती गुटे बड़ कार्डबोर्ड रे एमती फुटेइबो এবং कंपास गुटे नै आसीबो एकदम पाखा पाखी गुटे पोर्शन रो पाखा पाखी जोटी जाई फुटिछि देखिबो एमती कन्सेंट्रिक सर्कल गुडा पाइबो एठी मध्ये पाइबो किंतु जो दूरे दूरे नबो से सर्कल सरीबोनी एबे फुटेइकरी से आउ जागा नाही ए कार्डबोर्ड रो तुम्हें सर्कल कंप्लीट करियो कि एग्जैक्ट मझरे रखिबो से सीधा बट ऊपर जो डायरेक्शन रे राइट हैंड थंब रूल कहूची मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहूची आ एमती कले तळकु माने मु कहूची तम नाकपट सो ए सेही जिंस देखैची आउ थरे सेही जिंस देखैची आउ थरे पुणी आउ थरे राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप सेही जोटा मु बुझेई सालेनी सेटा all other fingers जदि तमे current direction देखैबो thumb will represent the direction of the magnetic field एई पुटकु चली आसिले तुमे thumb टाकु एई पोर्शन टाकु तमे धरिबो straight carrying conductor तमे सेठी thumb टाकु यूज करिवो direction of the current and all other fingers will be used for the direction of the magnetic field but मझी को चली आसिले तुमे circular loop रो current direction टाकु तुम other fingers देखैबो and thumb देखैबो direction of the magnetic field. अच्छा loop circular coil काहको कहंती गोटे single loop ननेकरी a coil is made by winding several turns of insulated wire in a circular form. The turns are closely spaced. Eta naked achi, but you can use insulated, but very close. Circular loops jodi saha emti buluthibo emti ki veikri pakha pakhi. Then gote turn gote end epote jibo gote end sepote jibo. So eta kahanti gote coil. And coil taku futeichi se कागज भितर फुटेची एंड यू नो आयरन पाउडर गुडा काणिक लगेची इलेक्ट्रिक करंट पास कले ऑटोमेटिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सर्कुलर लूप एंड इन दिस केस इट इज अ कॉइल and it will be producing a interesting you know field lines direction एमती ए पाखरे स्ट्रेट लाइन भले भाबिबो ए पोर्शन टा so it will be circular and jete dure ke dibo circle will not be completed and in the middle portion it will be straight. solenoid kaha ko kahati amo dekhiba solenoid hochi amar most important sabu device re ame solenoid paiba which is different from the coil re sabu guda ka turn guda ka pakha pakhi lagi ki than kintu eguda ka lagi kiri न थांती गोटे लंबा बाटर से बुड़े थांती इन हेलिकल मैनर सो मु पढ़ी दउची व्हेन ए लॉन्ग insulated wire long is tightly wound in the shape of a spring over a cylindrical hollow tube or a non-conducting tube, we get a solenoid. We can remove the tube later to have air inside the solenoid. That's called air core. ता भितरे जदि तमे ए कोर टाकू न नेलो
जो सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब जोटा नहींच किंबा सॉफ्ट आयरन सिलिंडर नहींच ता ऊपर उंड करी एई टाइप रो तुम्हें आउ आयरन कोर टाकू बाहर कल नाही तेबे भीतरटा आयरन कोर रही जीवो सेटा तार गोटे अलगा प्रॉपर्टी हबो तो इट मे कन्वर्टेड इट टू ए टेम्पररी मैग्नेट और इवन ए परमानेंट मैग्नेट तार रीजन आमे पढ़िबा आउ टिके परे किंतु तमे यूजुअली एयर कोर भीतरटा को कहती कोर एयर कोर करने को हेले तमे जो छांचटा नहीं थिबो जो सिलिंड्रिकल ट्यूब नहीं थिबो कि हॉलो ट्यूब नहीं थिबो ताकू बाहर कर दबो से सेमती रहिबो सेही सोलेनॉइड फॉर्म रे रहिबो नोट दैट हाँ inside the solenoid and in its interior part the magnetic field is uniform and parallel to the axis of the solenoid. This can be visualized by the right hand rule for a circular coil. आमे जानि छे प्रति जेमती coil रे बहुत गुड़ाक सर्कुलर टर्न थिला पाखा पाखी एटी मध्य सर्कुलर टर्न अछंती किंतु सेटी हेलिकल वे रे एमती 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 विंड हेकि गुडे बाट वाइंडिंग हेछि and as a result same principle apply habo so in the middle of the solenoid the field is uniform and parallel and straight but tome pakha pakhi pali jibo towards the one side then it will be bending it will be bent not straight not uniform ebong sethi pai solenoid ro di pranto epote terminal सेइट्रे यूनिफॉर्म नुहे note that the field inside an ordinary coil is not uniform like solenoid coil आउ ए छोटो यार जो ब्रेथ ता बहुत छोटो solenoid रो ब्रेथ ता बहुत अधिका when length ता एटा आकु जदी लेंथ कहबा एटा 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 को डायमीटर कहबा तार डायमीटर एटा जदी लेंथ कहबा इट इज वेरी स्मॉल चिपा चिपी के अछंती एटा बहुत लंबा तेणु भीतर भीतर मझी रे फील्ड ता यूनिफॉर्म तार यूनिफॉर्म न थाए एवं बाहर आर किंतु बाहर जो प्रांत रे टिके यूनिफॉर्म न थाए एमती एमती बेंड करि जाय तेणु से पोर्शन रे यूनिफॉर्म न थाए किंतु भीतर यूनिफॉर्म थाए मु देखे भी सेटा तो दिस इज ए सोलेनॉइड how it is wound आमे देखिले and मु ए मैथमेटिकल जिनसटा मु नेक्स्ट सिटिंग रे कहिबी जे गुटे सोलेनॉइड अछि and once current is going on and ता भितरे मनकर कोर होचे एयर छांचटा को बाहर कर देचे so that आमे टेम्पररी 100% टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट हबो इलेक्ट्रिसिटी जो पर्यंत जाउथबो इट विल बी बिहेविंग एज ए बार मैग्नेट सोलेनॉइड विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट केमि जानिबो तार नॉर्थ पोल कोटा केमि जानिबो तार साउथ पोल कोटा तार दीटा रूल अछि गोटे हला मैक्सवेल राइट हैंड रूल तमे कोन करिवो सोलेनॉइड टाकू तमे हाथ रे धरिवो एवं करंट रो डायरेक्शन टाकू तमे अदर फिंगर्स द्वारा बिकॉज इट इज ए सर्कुलर तेणु अदर फिंगर्स द्वारा तुम्हें करंट रो डायरेक्शन दबो तुमर थंब जो डायरेक्शन को डायरेक्शन दउची सेही एंड टा सोलेनॉइड रो सेही एंड टा हबो नॉर्थ एवं तार ऑपोजिट एंड टा हबो साउथ एटा देखो एटा हाथर पकाओ देखो तुम्हें कर अदर फिंगर्स आर पॉइंटिंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज एमटी एवं थंब टा पॉइंट करची टुवर्ड्स माय राइट so solenoid ro right direction ta habo north and tar opposite mane a direction ta habo south that is another rule ha jodi current ro direction ta change hegri emiti astola anti clockwise person clockwise jibo emiti puri dabo मझिरे हाथ रखिबो धरि दबो धरि दला परे तुम देखिबो अन्य अंगुठी गुडा को डायरेक्शन रे जाउची सेही डायरेक्शन रे तुम धरिबो so that it will represent the direction of the current एमिति धरथिली
कारण करंट डायरेक्शन एमिति थिला बेली मु हाथ रे एमिति धरतली अंगूठी गुडा को सब एई पटे करतली वर्तमान करंट डायरेक्शन सेपट को अछि तेनु मु सेपट को धरिबी सो द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट सो एई डायरेक्शन टा लेफ्ट डायरेक्शन टा एटा हबो नॉर्थ एटा हबो नॉर्थ एटा हबो साउथ किंतु ए केस रे एटा हबो नॉर्थ एटा हबो साउथ आउ गुटे बाट अछि से बाट कोन तुमे पळे आसीओ मुह पाखु पूरा ए सर्कल जो एंड टा सिलिंडर रो सर्कल टा होचे एंड मुह पाखु पळे आसीओ पूरा देखिबो जदी करंट रो डायरेक्शन जो आसुची तम आडू को आसुची जदी एंटी क्लॉकवाइज हुए ताले सेटा नॉर्थ पोल देखो नॉर्थ रे जदी एन लेखिकिरी जदी दीटा तीर चिन्ह दबा ऊपर गोटे तळ तळे एई ऊपर आ तळ एई तीर चिन्हटा को मार्क कर एटा एंटी क्लॉकवाइज को सूचौची तेणु नॉर्थ पोल स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट किंतु तुम एंड को आसे पड़ियो से ऑब्वियसली एपट एंड को गले तुम देखिबो क्लॉकवाइज जाउची तेणु एठी गोटे तीर चिन्ह एठी गोटे तीर चिन्ह देले ए तीर चिन्ह दीटा क्लॉकवाइज रो डायरेक्शन को मीन करचंती so in two ways you can find out the polarity of a solenoid acting as a electromagnet मते भल लागे मैक्सवेल राइट हैंड रूल सीधा मु धरि देबी एमिति जाउची करंट एमिति एटा हबो नॉर्थ पोल एपट एंटा हबो साउथ पोल एमिति गले एपट हबो साउथ पोल एपट हबो नॉर्थ पोल किबा एई केस रे मार्क करो एठी तुमे श्रद्धा तुमे ठिया आइचो तुमे मार्क करजो एपट एंटी क्लॉकवाइज करंट आसुची करंट रो डायरेक्शन ता तुमे देखिलो एंटी क्लॉकवाइज जाउची तो डेफिनेटली ए एंटा किबा तुम बाय चांस एपट एंड को पळेलो तुमे देखिलो क्लॉकवाइज करंट कोन मूव कलानी मूव करची क्लॉकवाइज यदि क्लॉकवाइज मूव करिवार देखिबो करंट को ताले सेही एंड ता तुमे साउथ पोल एंड रे तुमे अच्छा सो विथ दिस वी कंक्लूड दिस सेशन एंड हमें पुणी देखा हबा टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन where in this next class we will be finding that when a current carrying conductor or a moving charge को तमे जदी गुटे मैग्नेटिक फील्ड को आनिला आ गुटे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड चुंबक जोटा हमें पढुतले काली सेही फील्ड को जदी गुटे टेम्पररी मैग्नेट को आनिले माने इलेक्ट्रोमैग्नेट को आनिले तले दीटा फील्ड ये भी मैग्नेट से भी मैग्नेट दे विल इंटरैक्ट एंड द temporary magnet जोटा which is either a current carrying conductor or a moving charge that will get a mechanical force से move करिवो सो जो मोशन तार हबो ता डायरेक्शन कोन ओ डायरेक्शन से मूव करिवो with respect to current direction with respect to the magnetic field b direction so b I आउ जो हबो मोशन जोटा करिवो ता ऊपर फोर्स पडिवो ता रिलेटिव डायरेक्शन हम देखिबा बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम देखिबा नेक्स्ट टाइम बाय वर्तमान देखुचंती 13 जण फैंटास्टिक हमें एई अध्याय रे हमें बेसी किछि कले नै खाली देखिले स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जदी थिबो ताहले तार हां करंट पास कला माने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होउची मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होउची तुम जानी परिबो गोटे बाहरु मैग्नेटिक नीडल आनिले फटकनी डिफ्लेक्शन हबो को डायरेक्शन रे डिफ्लेक्शन हबो ऑलरेडी हमें 10 थर डिस्कशन करि सारछे आउ करबानी तार परे देखिले मैक्सवेल राइट हैंड रूल थंब रूल यूज करी करी गोटे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर रे को डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हबो तुम जानी परिबो थंब टा करंट अदर फिंगर्स कर्लिंग विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवं जदि उल्टा हबो करंट जदि इन ए सर्कुलर मैनर आसुथिबो ताहले द कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलरली एट द मिडल एरिया बट जदि पाखा पाखी पळे आसीबो गुटे सर्कुलर कॉइल रो पाखा पाखी सर्कुलर टर्न रो पाखा पाखी वायर पाखा पाखी कुनी पोर्शन नबो से कुनी पोर्शन को गोटे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर बोली बिहेव करिवो एवं सेठी तमे थंब टाकू करंट रो डायरेक्शन दबो अदर फिंगर्स टाकू दबो डायरेक्शन एंड यू विल गेट सर्कुलर लाइंस एंड यू नो हाउ इंटरेस्टिंगली गोटे एक्सपेरिमेंट सेट के गोटे करथिला एठी गोटे देखैथिल कोट नै एठी so that you will be getting circular lines of field lines in the vicinity of the wire but inside you will get straight other fingers will be giving showing the direction of the current thumb will be giving the direction of the field
but thumb will be giving the direction of the current, and other fingers will give the direction of the field. So eta dekhile au kichi dekhine au dekhile what is the difference between a coil and a solenoid lamba and uniform field bhitere di ebong तार जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हबो नॉर्थ पोल साउथ पोल केमती जानिबा दीटा वे रे जानिबा by holding and applying the right hand screw rule for the coil जो direction रे thumb jibo sei direct sei potota hochi north pole tar opposite potota south pole or coming to one end and seeing in which direction current is moving jodi anti-clockwise north clockwise south. Bye, see you soon at 7:10. कौन रहिला चार्ट मु टिके आजी